Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. This is one interesting question I have received from one of you, and it is about how we can make object disappear with the help of science. This is about making object vanish out of sight, and how we can do it. We can do it by immersing it into a media of refractive index same as that of the object. So this is what is coined over here as an as a question basically. So question is, why do objects of the same refractive index as the liquid become invisible on being immersed into it? So अगर हमारे पास एक liquid है and we if we are immersing into it an object, let's say there is one toy, and this toy we are immersing in this fluid, and this toy has refractive index mu, and this liquid also has refractive index mu. In that case we won't be able to see it. Now the question is why. So इस चीज को आंसर करने के लिए we should first try to understand why we are able to see anything in our surrounding. So let's talk about a beautiful flower just bloomed in our garden. So कुछ ऐसा flower है and we are able to see it. Why? क्योंकि देखो यहाँ पे I mean in daylight light must be falling onto this flower, ठीक है, and the light getting reflected from the flower will reach to our eyes, and then our eye lens will form the image of this flower. डन है, क्योंकि हमारे आई में क्या होता है, लेंस होता है, एंड दैट लेंस बेसिकली फॉर्म्स इमेज अगेंस्ट द रेटिना ऑन द वॉल ऑफ रेटिना, राइट, एंड देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली देखो, जब भी लेंस होता है, आप ऑब्जेक्ट होता है, आप उसका इमेज बनाते हो, डन है. यहाँ पे भी ये फ्लावर ऑब्जेक्ट है एंड हमारे आई का जो लेंस है उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, एंड देन यू शुड बी गेटिंग लाइट coming from the object in order to form its image, and so that you can see the that image, यानी कि you can see the object, right? So यहाँ से light आनी चाहिए, and यहाँ से light तभी आएगा if light falling on the flower is getting reflected back into your eyes, right? अगर यहाँ पे reflection नहीं होता, let's say there is no reflection happening, in that case light will straight go like this way. So अगर reflection नहीं हो रहा है, it won't reach to your eye, done है, and in that case we will say that you won't be able to see the object, done है. सो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? रिफ्लेक्शन होने के लिए ये जरूरी है दैट लाइट इनकाउंटर्स बाउंड्री, एंड बाउंड्री इज व्हाट इट कैन बी वन इमेजिनरी सर्फेस सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, ठीक है. सो अगर यहाँ पे एयर और फ्लावर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लाइट को यहाँ पे बाउंड्री फील नहीं होगा, इट्स स्पीड वोंट चेंज एंड इट विल सिंपली गो ऑन ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन. जैसे आप रोड पे बाइक चला रहे हो, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यू विल कंटिन्यू विथ योर स्पीड एंड विथ योर रूट, राइट. अगर ट्रैफिक मिलता है, यू विल स्लो डाउन, इट विल यू विल चेंज योर ट्रेजेक्ट्री. In that case there can be reflection, refraction. So if nothing is happening, I mean you won't be getting light coming back to your eyes, and in that case you won't be able to see the object. So अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि ठीक है इधर से लाइट तो नहीं आ रहा, आप एक काम करो, आप यहाँ खड़े हो एंड फ्लावर के जस्ट डायरेक्टली इधर से भी तो सनलाइट फॉल कर रहा होगा. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट सिचुएशन. इफ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, देन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से लाइट आप ऐसे कर लो फिर, but this is the light directly coming from sun, this is not the light coming from the flower. और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए यू नीड लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट ऐसे फॉल किया, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी गेटिंग received by this atoms of the boundary, what will happen, they will vibrate and do something because of which reflected light gets generated. सो ये मीडिया का प्रॉपर्टी है दैट जनरेट्स रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट. सो अगर ये लाइट डायरेक्टली ऐसे आ रहा है, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन, it is not coming from the object, and in that case we won't be able to form the image of this object, and we won't be able to see the object indirectly, we can say, right. So ये बहुत जरूरी है that this object has refractive index different with the media in which it is kept. So यहाँ पे भी देखो, लाइट अगर यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल फॉल ऑन टू इट, और यहाँ पे जब ये फॉल कर रहा है ऑन टू दिस ऑब्जेक्ट, इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज दैट ऑफ द मीडिया, ये सिंपल ऐसे चला जाएगा. बट इफ इट इज डिफरेंट, दिस बाउंड्री एट दिस बाउंड्री रिफ्लेक्शन विल अकर. रिफ्लेक्शन मीनिंग लाइट विल गेट जनरेटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, बेसिकली यू कैन से इनडायरेक्टली, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है,
and that is falling into your eye, that is entering into your eyes, in short, on your lens, and that lens will form the image of this object and you will be able to see that. डन है. सो किसी भी चीज को देखने के लिए ये जरूरी है कि वहां से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर लाइट इज रीचिंग इनटू योर आईज. इफ नॉट यू वोंट बी एबल टू सी इट. डन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. एक और क्वेश्चन था, एंड क्वेश्चन ये था, इफ वी कीप अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस I mean glass slab sort of a structure, then why we get to see infinite number of images. तो सबसे पहले आप देखो, let's say this is the object and let's say यहाँ कहीं observer है, यानी कि specifically here I am not making the eye, but in this region there is the observer. So इस object को वो glass slab के through देखिएगा, then how many images the person will see, that is the question. So let us check. अब यहाँ पे देखो, मैंने इस बॉटम पार्ट को सिल्वर कर लिया है. क्यों किया है? क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइट रिफ्रैक्टिंग थ्रू दिस सरफेस. क्यों? क्योंकि इससे लाइट रिफ्रैक्ट करके इधर जाएगा एंड आवर ऑब्जर्वर इज नॉट इन दिस साइड. सो सिंपली हमें कैलकुलेशन को और लेंदी नहीं करना, डायग्राम को वी हैव सिंपली सिल्वर्ड इट. Correct? Because we are interested in reflected light reaching to the observer this side, refracted light reaching to the observer this side. ठीक है. So let us talk about this. Suppose कर लो एक ray of light normally incident हुआ. So whatever will normally be incident onto the glass slab, will go or will refract like this. ठीक है. क्योंकि angle of incidence is 0, angle of refraction will be 0. Now let us take one oblique light. So it is falling like this, और अगर ये ऐसे fall करता है, then it will refract towards the normal into the glass slab like this. Let's say this is I, this is R, and uh, some of portion of this incident light will reflect also. और ये reflected light का portion जो होता है ना, काफी कम होता है. So it is basically 4 or 5% of the incident light. So this is, let's say, 5%, then 95% of the light is getting refracted into the glass slab. And this refracted light के साथ क्या होगा, यहाँ पे आप normal बना लो, it will reflect. यहाँ से कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा, राइट. सो इट विल रिफ्लेक्ट. अब यहाँ पे ये फिर से आया, एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, इट हैज टू फेड. So this is that 95% of light, again 5% of it will what it will reflect, and rest 95% of this 95% will refract. ठीक है. सो आप यहाँ से चेक करो, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो इमेज बनेगा वो तुम्हारा किधर बनेगा. It will be somewhere here, right? So this will be the image because of reflected light, and image because of refracted light. वो तुम्हारा किधर दिख रहा है? इधर. ठीक है. So this is one second image. क्योंकि देखो एक incident light यहाँ भी था. So sorry, this was the incident light and it will get refracted along the same line. So it is this. So basically this point is meeting point of two refracted or reflected lights. ठीक है. यहाँ से लाइट अगर रिफ्लेक्ट भी करवाओगे या रिफ्रैक्ट करवाओ, इट विल गो लाइक दिस. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स, दिस पॉइंट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्रैक्टेड लाइट. सो दिस इज सेकेंड इमेज. उसी तरह से आप देखो, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था, अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक to the front surface, and यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा. अगेन यू विल बी गेटिंग द इमेज, and so on it will continue. ठीक है. So if we talk about brightness of the image, अब brightness of image की बात करो, यहाँ पे इस इमेज का ब्राइटनेस क्या होगा, इट इज बिकॉज ऑफ 5% ऑफ लाइट, राइट. सो इसकी ब्राइटनेस कम है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड पार्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ 95% ऑफ लाइट ऑलमोस्ट, राइट. सो दिस इज ब्राइटेस्ट, आई मीन ब्राइटर देन दैट ऑफ फर्स्ट इमेज I1. और अगर आप इस इमेज की बात करो, देन दिस इज बिकॉज ऑफ 5% ऑफ दिस 95%. और इस 5% का भी फिर से क्या हुआ है यहाँ पे, अगेन 5% ऑफ दिस विल गेट to this side, and rest 95% of this 5% will get to this side. So definitely this refracted light intensity is much less than that of this one. So this image will be fainter. I mean it इंटेंसिटी अगर चेक करो, इसकी ब्राइटनेस I2 से काफी कम होगी. सो लेट्स से दिस इज I3, एंड सो ऑन. इफ यू विल कीप ऑन मेकिंग, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. डन है. सो डेफिनेटली वी कैन ट्रेस infinite number of images over here. Like this you can talk, this is one, this is second, this is third, this is fourth, such that second image is the brightest. So this is your brightest image. So I hope you are done with the concept that
हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल। सो उस पोर्शन में मैंने ये समझाया सिंपली कि ऑब्जेक्ट्स को आप तभी देख पाते हो व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड from it or refracted through it is able to reach to your eyes। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को होने के लिए जरूरी है that light encounters media or light encounters boundary will only occur when it is separating two media। अगर ऑब्जेक्ट को आपने सेम मीडिया में रख दिया है एज दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दैट केस बाउंड्री मिलेगा नहीं, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, एंड यू वोंट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड केस में आई होप यू आर एबल टू सी हाउ इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, और अगर तुम्हें ग्लास स्लैब के थ्रू इमेज भी बनाना है, जैसे सिंपल ऐसा ग्लास स्लैब है, शिफ्टिंग ऑफ इमेज का भी क्वेश्चन आता है। लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड देन देर इज मिरर ओवर हियर, ठीक है। सो इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इनिशियली व्हेन देयर वाज नो ग्लास स्लैब दिस डिस्टेंस वाज यू, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर विल इट शिफ्ट। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट करेगा या अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट करेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ से लाइट ले लो, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट, एंड व्हाट यू विल डू, light is incident on the first surface and it will refract towards the normal like this। यहाँ पे भी normal बना लो। Again light will refract away from the normal like this and fall on the mirror। So mirror पे light किधर से fall कर रही है, somewhere यहाँ से। So for mirror light is getting shifted, object is getting shifted towards the mirror, ठीक है। So यहाँ पे this is new object distance। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज दिस शिफ्टिंग डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। तो इस चीज को निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो। लेट्स से यहाँ से इनिशियल डिस्टेंस x नॉट था एंड दिस थिकनेस इज t, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है इस सरफेस से, दूसरा हो रहा है इस सरफेस से। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस। सो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द रियल ऑब्जेक्ट दिस वन, राइट, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इसी से आ रहा है, डन है। सो फॉर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज दिस ओ एंड लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड इन into the media of this glass slab। let's say it has a refractive index of n। so अगर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन को आप ट्रेस करो तो इमेज कहीं इधर बन रहा है, राइट। सो दिस इज द इमेज गेटिंग फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालना है, क्योंकि देखो सेकंड सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है दैट इज गेटिंग इंसिडेंट, this light is incident, right, and this appears to come from this thing, this I1 thing। so for second surface I1 is the object, right, and finally it is getting refracted into this media। सो फाइनल इमेज जो आई है उसको अगर इंडिकेट करना है विच विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, वी नीड टू talk about refraction through both the surfaces 1 and 2। so let's say first refraction के लिए I want to calculate image distance। so object यहाँ था, it is falling onto second surface like this, so image getting formed is over here I। This distance was x naught and this is your t। Let us explore it। अगर हम इसको explore करते हैं what we can write। So चलो लिखते हैं यहाँ पे I mean रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब आप देखो यहाँ पे r तो इन्फिनिट है क्योंकि ये कर्व सरफेस नहीं प्लेन सरफेस है, सो r इन्फिनिट हो जाएगा। सो दिस टर्म 1 बाय इन्फिनिट विल बिकम 0, राइट। सो दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये म्यू2 क्या होता है, म्यू2 is basically refractive index of media in which light is getting refracted। म्यू1 is what refractive index of media in which incident light is। so incident light यहाँ है, refracted light यहाँ है। incident light is in media of refractive index 1, refracted light is in media of refractive index n। so आप पुट करो यहाँ पे with proper sign convention, object distance is x naught, you will measure it from this position। so you are measuring it against the direction of incident light, it will be minus x naught। so mu2 का वैल्यू आप पुट करो n by v minus mu1 1, u का वैल्यू क्या रखोगे minus x naught equal to 0। so n by v is equal to minus 1 by x naught। so v equal to how much, minus n x naught। minus sign indicates that image getting formed
is on the side of object. So it is this. And this distance is now how much? nx naught. अब देखो सेकेंड सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है दिस वन, यानी कि दिस I1 is acting as the object. ठीक है, so for second surface object distance will be how much? Object distance will be this is going to be nx naught plus t. Let us again use this formula. So mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0. ठीक है, अब देखो सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट इज इन द मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज इन द मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. डन है, सो यहाँ पे mu2 will become 1 by v minus mu1 is how much? It is n divided by u minus of nx naught plus t. Why minus? Because of the sign convention thing, क्योंकि अब image distances you are measuring from here, and for measuring this object distance you are moving against the direction of incident light, so negative. ठीक है, this is equal to 0. So 1 by v is equal to n by nx naught plus t. So v is equal to how much? nx naught plus t by n. It is this one. Okay. अब देखो शिफ्टिंग कितना हुआ है. So न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा? यहाँ होगा. एंड ये तुम्हें कितना आया है? दिस इज दिस वन, nx naught plus t by n. Let us make one fresh diagram. So यहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ. After refraction through the first surface, image got formed over here, and after refraction through second surface, image got formed here. ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइनली कितना आया? इनिशियली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वाज हियर, and this is how much? nx naught plus something, right? nx naught plus t by n. So this is nx naught plus t by n. ठीक है, and initially object is at what distance? I mean यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट को मेजर करते हो, इट इज दिस डिस्टेंस. दिस इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू, दिस वाज x नॉट, राइट? सो दिस इज x नॉट, दिस इज t. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप देखो, दिस इज x नॉट प्लस t, एंड फाइनली इट इज वेयर? फ्रॉम दिस एंड it is from, it is at a distance of nx naught plus t by n from this end. So what is the shifting? अगर आप shifting check करो, this is the shifting, right? So what will be this value? So this value is going to be equal to x naught plus t minus n x naught plus t by n. ठीक है, so this will become how much? X naught plus t minus n x naught by n will become x naught minus t by n. So this is equal to how much? T 1 minus 1 by n. So this is your shifting. डन है. सो अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, दिस इज मिरर एंड देन देर इज ऑब्जेक्ट, इफ दिस डिस्टेंस इज समथिंग यू, एंड बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब being kept, what will be the object distance for mirror? So object will get shifted towards the mirror by this distance. So you से इस distance को आप minus कर लोगे, that will become the new object distance. Okay, so I hope you have understood concept like this, and I hope it is clear. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.